Assalamu alaikum dear students. Welcome to English Grammar Classroom Standard 7. We are learning lesson number 19, the prepositions. Half of the lesson has been explained to you. Now we shall study the next topic in this lesson. In your timetable it has been given English period, but in this week I am teaching you English grammar. So take out your English grammar notebooks and books and open page number 94. We are learning. In my last video also I taught you some prepositions, and in this video also I am going to teach you the lesson prepositions, page number 95. I have explained you up to the point number 4, beside and besides. This much explanation has been done. Now let's see next. It is number 5, in and within. In and within. See, take out your books, open your books, and you may also watch on the screen. See the use of in and within. In means at the end of some future period. At the sum of some future period, आने वाले वक्त में. Within means before the end, यानी ख़त्म होने से पहले. The project will be completed in a week. एक वीक में यानी पूरा वीक खत्म होने तक कंप्लीट होगा. At the end of the week. The project will be completed within a week. Before the week ends, मतलब वीक एंड होने से बिफोर. So that is the difference between the use of in and within. Next is at and about. At is used with a fixed moment. About indicates approximately to be a certain time. For example, he will be here at 4 o'clock. At also denotes time, so we use preposition at to show the time also. He will be here at 4 o'clock. He will be here about 4 o'clock, because about indicates proximity to a certain time. About मतलब के नज़दीक, इसका यहाँ ये मीनिंग है के नज़दीक, approximately. And at fixed, that is the difference. Till and by. Till means not earlier than. By means not earlier than. For example, the school bus will wait till 6 in the morning. See, while we read the example, the concept is clear. So try to understand through the examples. The school bus will wait till 6 in the morning. We should return from the picnic latest by 6 in the evening. तो जो है हमको बाय और टिल मतलब कब तक, टिल में तक, और बाय का मीनिंग है से. वी शुड रिटर्न फ्रॉम द पिकनिक लेटेस्ट बाय 6 in the evening. यानी हमको बाय का मीनिंग भी यहाँ तक हो रहा है कि 6 बजे तक या 6 बजे से पहले. यहाँ बाय का मीनिंग क्या हो रहा है, से. 6 बजे से पहले हमें पिकनिक से आ जाना चाहिए. Try to understand the difference. For and since. Next topic is for since and ago. This is very important. See, we use for to denote a period of time. Period of time यहाँ से यहाँ तक के बीच का जो टाइम है, समय है, उसके लिए हम for यूज़ करते हैं. We use since to denote a point of time, and ago is used to denote a past action at time measured from the present.
इन सिंपल वर्ड्स यू विल अंडरस्टैंड. फॉर जो है वो ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए यूज़ करता है. फॉर एग्जांपल 2 hours, 5 years, 3 minutes, 1 year, for 1 year. So we use for the duration of time. Since for the starting point of the time, जहाँ से काम शुरू हुआ था. I started knitting the sweat. I am knitting this sweater since 9 o'clock in the morning. मैं सुबह 9 बजे से स्वेटर बुन रही हूँ. So the action started at 9. So I will use since. I am doing this work since 9 o'clock. The time started from 9 o'clock. So I am using since. And ago is used to denote the past action, past time. जो पहले हो चुका है, अब से पहले जो हो चुका है उसके लिए हम एगो यूज़ करते हैं. सी द एग्जाम्पल. ही हैज़ बिन स्लीपिंग सिंस आफ्टरनून. दोपहर से सो रही है. कृष्णा हैज़ बिन वर्किंग एज एन एक्ट्रेस टू द पास्ट 10 years. फॉर द पास्ट 10 years. Karishma has been working as an actress for the past 10 years. For 10 years is a time duration for which Karishma has been working. पिछले 10 सालों से करिश्मा एज अ एक्ट्रेस वर्क कर रही है. एक्ट्रेस एज अ एक्ट्रेस शी हैज़ बीन वर्किंग फॉर 10 years. ड्यूरेशन ऑफ टाइम वी यूज फॉर. We will lived in the same colony 2 years ago. We lived in the same colony 2 years ago. Past time. Past गुजरे हुए वक्त के लिए हम ago यूज़ करते हैं. ago हम 2 साल पहले. In the same colony 2 years ago. हम 2 साल पहले इस कॉलोनी में रहते थे. Note. Since is preceded by a verb in some cases of perfect tense. Since perfect tense में ही यूज होता है. Next is from. From is used before a noun or pronoun. This preposition from is used before a noun and pronoun denoting some period of time, but unlike since is used with all the tenses. Since perfect tense में ही यूज़ होता है, लेकिन from जो है वो सभी tenses के साथ यूज़ होता है. I will go to school from the month of June. फ्यूचर में भी यूज़ होता है, प्रेजेंट में भी यूज़ होता है, पास्ट में भी यूज़ होता है फ्रॉम. लेकिन सिंस जो है वो परफेक्ट टेंस में यूज़ होता है. बिफोर एंड फॉर. बिफोर इज यूज टू डिनोट अ पॉइंट ऑफ फ्यूचर टाइम. बिफोर कब यूज़ होता है? बिफोर इज यूज टू डिनोट अ पॉइंट ऑफ द फ्यूचर टाइम. फ्यूचर में एक कोई पर्टिकुलर फिक्स टाइम को बताने के लिए. लगेज विल बी रीच्ड योर डेस्टिनेशन बिफोर सनसेट. I am not resuming my work for another 6 months. So, before and for. कोई फ्यूचर में कोई काम जो होने वाला है उसके लिए बिफोर यूज होता है. ऑन एंड ओवर. नेक्स्ट वी कैन सी the next also on next page number 96. On and over. On denotes actual contact with some object. Over denotes not. Over does not do so. For example, the bridge is built over the Sabarmati river. The paper is lying on the table. We have done up to 11. I think we shall stop here
and we shall learn all the other prepositions, because they are so many and you will get confused. Each and every preposition is given double, and that much you have understood, that will be okay. And in the next exercise, in the next video, I shall explain the remaining prepositions, and we shall inshallah solve the exercise also. I am stopping my video here. Have a nice day. Allah Hafiz and goodbye.